best and hottest Indian radio network in the entire world. Mahima Creations Proudly present Premier Evening Drive Time Show. Bam Bam! Yes, you heard it right. Bam Bam! Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's beat the traffic. Bam Bam! నమస్కార్ Namaste. నమస్కార Vanakkam. ఖుషామది Assalamualaikum. సత్ శ్రీ అకాల్ మీకందరికీ వందనము. जय स्वामी नारायण जय श्री कृष्ण. जय जनेन्द्र हमारे इस्माइली भाई बंधुओं को बोल दे याली मदद. मौला अली मदद बोलते सारे फीजे मतलब बोलेंगे नीसा बोला बरजन हम आ गए हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारा मैं से फालतू बाबा And of course, myself, Faltu Rani, लेकर आपके लिए एक drive time show that's going to make it totally exciting and totally mastani. So, Altu Baba, वो क्या बात है I was trying to see if you can lead into that. Okay? सर्वे जना हाँ क्लियरली सुनो. हाँ क्या बता। वो मैं भूल गई. वो तो एक क्या था ना एक बार. हाँ क्या था एक बार क्या था हमने एक्चुअली वो है ना आज जो है ना बरजन आज वेडिंग बेल वेडनेसडे यार कि मंगल्यम तंतुदानेन मम जीवन हेतुना. देखो मतलब ये जो है ना ये आई डोंट थिंक देखो इंडिया इज सच अ डाइवर्स नेशन वी आर फ्रॉम अ कल्चर व्हिच इज सो डाइवर्स व्हाई आई से दैट बिकॉज़ कल्चर में हमारा सब कल्चर्स है हमारे इंडियन कल्चर में द सब कल्चर्स विद इन दैट आल्सो एज इन कुछ लोग पंजाबी हैं कुछ लोग गुजराती हैं कुछ लोग यू नो बंगाली हैं कुछ लोग यू नो साउथ इंडियंस हैं मतलब दे आर पार्ट ऑफ यू नो केरला और पार्ट ऑफ तमिलनाडु पार्ट ऑफ कर्नाटका Now, why I said that is because South India has a bunch of other subcultures in it. North India has a bunch of subcultures in it. East India has subcultures in it, and even West India has subcultures in it. Right? Culture में subculture सभी culture ही है हमारा. Yeah. But the point is just like the kind of the why are we part of a Indian culture or a Hindu Bharat culture, right? Hindustan culture जो होती है ना जो भारत culture होती है, why are we that, right? That's because the fact that we have one collective thing which we do. Correct. We all do it. In fact, it's so capitalist government has. Excuse me, what are you talking about doing? Huh? What are you saying? Yeah. That's first of all, Faltuni, what you need to do is take some Clorox and clear your ears and your mind. What? Doing as it we consume something which is like you know universally cross culture universal. Acha. Cross culture, but cross culture of Indian culture, right? And that is consuming media. The way we consume media, may it be news or may it be you know the film industry, right? Movies, jo hai na, the way we consume is something common among. We find a commonality in that, right? And if you look at it, right, the culture which we actually which we consume the most dictates the way we lead our life also, because that also shapes our own beliefs and belief systems and everything, right? So hence, it is very important for us to be mindful when you're making something for the mass media to consume, and that's how we put a lot of thought into our program. And today pretty much this show के लिए मैंने पूरे फालतू नहीं won't believe 25-30 seconds में सोचा इसके बारे में. वाह. Yeah, मैं तो बहुत I'm very serious about this फालतू नहीं because इतना टाइम लगाया आलतू बाबा. I know, right? You're very serious about wedding bells. Huh? He's very serious That's about why wedding bells. yes, very true. No, Dung 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 dung. Ba 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 ba. Very good. Shehnai, देखो फालतू नहीं point in case in point right now. You just talked about 2 मिनट पहले तूने क्या बोला? शुरू किया तूने? हाँ वो सब. And then बाद में पेपर क्या नाम है? शहनाई आ गई बाद में. Right. But don't you see one thing मनोजन? ये जो दो specific. They do that in the Bengali thing, no? Something like that. For a moment, Father, I got scared. अंदर का जानवर बाहर के सोचा. हाँ, but like that. क्या बोला? मतलब अंदर का जानवर है Father, जगा दिया ना मैंने. I always bring out the beast in you, right? Always. The best in me. Oh, is that a spelling mistake? You're the beast. God. Well, Virgin. The point is today we're going to talk about wedding bells and how Indian cinema actually has influenced our culture and our subcultures also, right? Because the marriage used to happen, let's say 5 decades ago, right? To now, there's a world of a difference. Wow. Right? Marriage used to happen a certain way in our culture. It was called as Aryan marriage. Was it called Aryan style of wedding? No man. Different people have different styles. There's Vedic marriage. हाँ, Vedic marriage. Arya Samaj marriage is different. हाँ, because the thing is, marriage जो होती है ना is actually a social institute. It's an institution created by the society to say, okay, this is what officiating you as a couple, right? And of course, whatever comes benefits along with that, they come with it. But the point is,
it was actually something which the community came together and ratified for you, saying, okay, oh, now you are man, woman, or what do we call, right? Husband, wife, right? तो देखो कितनी सालों से अरबों से, मतलब like, for thousands of years we've had this institution going on. It still is going on. It's still considered to be a certain style of wedding going on. But the format of the wedding, no, I'm not talking about the relationships. Relationships has gone south totally. More than KHUSHI, there's more gum in it. But the point I'm talking about, no, everybody report that way. Reported as far. I don't know. I can't take. Why you look that way? You don't think so, is it? There is more gum. चिपक गए हैं एक दूसरे से. गम. फेविकॉल का जोड़ है. सस्ता टिकाऊ. सस्ता टिकाऊ की बात नहीं कर रहे हम लोग. हम तो उस खुशी गम की बात नहीं कर रहे. मैरिज उसमें, okay, you might have a sore experience, you might have a great experience, doesn't matter. You feel like coming, calling today and sharing, great, wonderful. But most importantly, talking about the Sangam, the ritual of the unity, the union ritual जो होती है ना, उसकी बात करने वाला आज. And Indian cinema actually has done a fairly good job in representing marriage in multiple places. Really? Multiple situations. नहीं रे, ज़्यादा से ज़्यादा Indian cinema has only shown Punjabi wedding. Good. This is what I want. In everything, the doula will come on a horse, and then they'll be like, Dulhane dulhan le jayenge. Balle, right? Yeah. The point is, Manajan, today, are we doing justice to that particular to our cultures, right? Are we like trying to, because nowadays, even a wedding which wouldn't have a Sangeet probably will start having Sangeet nowadays. Oh, that's true. Yeah. Actually, even South Indian weddings seem to have Sangeet now. And the thing is, the influence of the media is such that it actually is people are aspiring to have those $1 million weddings. And what do they call it? Desis only will get married, but they'll wear the, gown. The white gown. Walking down the aisle. Whereas हमारे culture में white नहीं पहनते हैं when they are married. Exactly. They're not supposed to wear a white color. And exchange of vows or सब कुछ होता है. And of course, फेरे लेना फालतू नहीं. फेरे, what do we call it? फेरे, what do we call it, right? ये जो फेरे लेना जो concept है, not all places have it. Correct. Not all cultures have it, right? Like in Indian cinema, now you can see that kind of a thing, right? For instance, let's also include the fact that it's not only the Hindu culture, we're talking about even the Islam culture where they have the nikah, right? How many movies have shown that? Lots of movies have shown. How many movies have shown that? Off late? Few. Very few. Very few. Yeah. But yeah, they have been. So try think about it and give us a call here. What is I get something. Sangeet पहले भी था होता था. अरे संगीत होता था बाबा. I'm talking about different cultures. विशाल जी welcome Facebook पे आपका स्वागत है. विभा जी आपका भी स्वागत है Facebook पे. And of course जैसे महाराष्ट्रियंस में संगीत होता है क्या? I don't know. We don't know. So, I'll tell you what. Today, the best part is to identify where we are right now. One thing, litmus test, see where we are. What is exactly considered to be a ritual for a marriage, right? Because आजकल marriage can also be recognized by the state. Yeah. So you don't have to have elaborate marriage. You can just go to the marriage office or what do they call them? Faltoni? What do they call them? I don't know. Where's the office? You go officiate your marriage. Oh, that is a registrar of marriage. Registrar of marriage. You go there and you put your name down there. Have 2 witnesses. Then boom, you're done. Right? Done. Yes. But the point is that what it is? Is that what's come down to? Do we have to have a ritual? What is the purpose of the ritual? What do you think is the best ritual? Did you have a marriage that way? Did you have an elaborate marriage of around 5 days, which typically is supposed to be the thing in our culture, right? 5 दिन पूरा गांव को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, पार्टी वार्टी होती है, बाद में भेज देते हैं सबको, right? क्या था आप लोगों का? Give us a call here 408-912-2479. And if you're part of the inner circle, of course, you can also do a video call for us. How do you do that? That is not the video call. How do you become inner circle? Just follow the scrolly number down there. Yes, you see that 408-660-6753. वहाँ पे WhatsApp कर दीजिएगा ताकि बोले and tell them that you actually want to join us on the video call, and you can directly call into the studio. Yes, but we're the only radio show which actually have you call in as a video call. So first of all, let's also acknowledge the people joining us just now. All the late Latifs. दीपा जी नमस्ते पैम पैम टू यू. विशाल जी नमस्ते पैम पैम टू यू. विभा जी नमस्ते पैम पैम. ऑलरेडी मैंने पैम पैम बोलते, विभा जी ऑलरेडी बोलते. दीपा जी अभी एंट्री मारी हैं. वो लेट. दीपा जी देखो कितना लेट आती है, देखा लेकिन दीपा जी तो प्रॉम्प्टली मैसेज करते प्लीज स्टार्ट अर्ली, वो सब बोल देती है. चित्ता माता जी. I saw that comment. You saw the comment, right? Yeah. But she did not. And welcome Falguni जी, कैसे हैं आप? Very good. तो आज आप कॉल करके बताइएगा कि आपका वेडिंग कैसा रहा, and आजकल क्या हो रहा है वेडिंग्स में? Because I don't get invited to weddings. Well, actually, no, I got invited to a wedding last week, a week before last week, or was it last month? Falguni ji, Jai Shri Krishna. Nice to see you joining us as well. Very good, Falguni. The point is, we're asking about wedding bells. We got wedding. Wait, are you going to be the welcome committee or the wedding committee? We got married. I mean, chair. We got invited to a marriage. Remember recently? Yes, we did. I loved it. It was a Punjabi wedding, but was they like said a 3-day wedding. It was like they said it was a very miniature Punjabi wedding. 3 days. Wow, it was wonderful. They said it was just a miniature one. I'm looking forward to a very elaborate 5-day marriage. तू पंजाबी
लड़की से शादी करना, कोई कर देता पंजाबी हूँ। कुड़ी पकड़ ले, चल यार, कर और दिया। अच्छी क्यूट सी स्वीट सी। तू ना बस फालतू नहीं, तू मान, मैं तेरा बात मान लूंगा, तू बस एक पॉइंट करके बता ये लड़की को शादी कर ले, मैं शादी कर लूंगा। अच्छा हाँ मैं तो फिर नहीं, लूंगा। लेकिन मैं वहाँ पे वो नहीं पहन सकती ना। क्या अच्छा, नहीं? वो 9 yards का साड़ी वैसे ऑल दैट कैसे पहनेगी? Good, you brought it up, Faltu. Yeah. See, every wedding, every culture, subculture have their own speciality of the wedding. So let's see if you can give us a call here. And have you tried to stay true to the core of your culture, or have you said like, khali wali, let's do whatever comes to mind, right? You could wear a white gown to go walk down the thing, or further, I don't know. यहाँ पे हमारे यहाँ पे they don't walk down the aisle; they'll be carried into the particular mandap, right? And then given a marriage there, right? And yes, Indian cinema देखा जाए तो the Hindi cinema is supposedly considered to be secular, right? So they don't show details about all these marriages, right? But regional cinema actually have talked a lot about these movies. There are many songs which are actually circle around the culture of marriage. ऐसा तो आपको वर्जन यहाँ पे कॉल करना है 408-912-2479। कोई हमें मैसेज कर रहे हैं, दीपा दोडीहाल बोल रहे हैं कि फेसबुक पे नहीं आ रहा है। क्यों? आई हैव नो आइडिया क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। I don't know. फेसबुक पे आ रहा है। माम ने क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है because people are on Facebook right now and विशाल जी बोल रहे हैं हमको नहीं बुलाया, कौन सी शादी थी? कौन सी शादी थी? आप आए थे, आप भी वहाँ पे मेरे साथ में आपने पूरा रिचुअल किया था फॉर द ब्राइड, राइट? आप भूल गए क्या? सही में डजंट मैटर, लेकिन कॉल कीजिएगा, बताएगा 408-912-2479 पे। एंड यस, बंधुस एक्चुअली मैसेजिंग अस, सो स्वीट ऑफ यू टू टेल अस व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स नॉट हैपनिंग ऑन फेसबुक, बट ऑफ कोर्स आई वांट टू मेक श्योर दैट ऑल द ऑडियो सिस्टम आर वर्किंग। फाल्तू कैन यू प्लीज कंटिन्यू व्हाट यू गोइंग टू टॉक अबाउट? एब्सोल्युटली। सो बनीजान, आज आपको कॉल करना है एंड आपको बताना है कि flashback to the time when you got married, if you're married, or if you're aware of how certain elements in your marriage, and is that accurately depicted in the movies? कोई मूवी है जिसमें दिखाया गया है ऐसे होता है, या कोई मूवी ऐसा है जहाँ पे दिखाया जाता है कि I don't know. Is it accurate? Is it correct the way it's? I feel to a great extent. The reason I think Aldo also brought about this topic is there's a lot of cultural appropriation happening. जहाँ पे बोलते हैं कि लड़की for example, there's a very popular series. I'm not going to name that series. Well, I'll name it. Big deal. On Netflix called Bridgerton. Okay. Their favorite. Softcore porn. Shut, be quiet, man. No, it's not. It's not at all. In this series, the heroine is a Indian. Okay, she's supposed to be from India. Yeah. So this heroine, they say, is married to, no, not married to. She's the daughter who is of Maharashtrian father. Okay, Maharashtrian father. But she calls her father, her sister and she call her father Appa and Amma. So Maharashtrians don't call their parents Appa and Amma. But her mom is South Indian. No, her mom is English. Oh, really? Yeah, her stepmom, that is. This is not right. This Yeah, is not done. it's real utter cultural appropriation. They have not even done the research to find out what you call father and mother. Wait. Faltoni, go on. So they've not researched that thing, They've not. And then I saw another series, Netflix movie, where again they say that the name of the Indian father is Krishnan, it seems. Oh my God. But the last name is Khatri. Krishnan Khatri. Khatri. So he actually South Indian born No, to Punjabi. And she's speaking like she's a Punjabi. They're in Delhi. Okay, but they will show that the girl is calling her Amma. Oh, Badly. Papa and Amma. This is totally confusing. It's Are they trying to mix everything together, serve us as a I really don't know. They don't have even the slightest clue. There's a silly movie that Priyanka Chopra Jonas has produced on Netflix. I can't imagine Priyanka Jonas. Yeah. She's supposedly a Punjaban. She has Mumbai. produced it. She has produced it, and it's the most ridiculous. It's a movie called Evil Eye. Okay, it's ridiculous. One moment she's sitting in Delhi, they don't show the transition and when she realizes her daughter is in danger, next cut to scene, the next shot, she's already, and they don't show the time lag also. The dad says, "I'll pick you up at 4 o'clock in the evening," and she's there. She's already in a cab in what is that, New Orleans. Oh my God, Faltani, speak your
sitting and people sitting in cab. We have actually Father sitting on a, I'm Vishal sitting on a couch and waiting to come and chime in on today's show. Vishal ji, namaste. कैसे हैं sir? हाँ. नमस्ते पैम. Very good. क्या खा रहे हो? See, you know, video में वही advantage है. We can easily make out what you're eating and what you're not eating. And अकेले खा रहे हो? हाँ. और चाय तो हमारे पास भी है. पकौड़े लेके आओ. हाँ? क्या खा रहे हो? हाँ, मूंगफली खा रहे हो. हमें मालूम है, वो भी हमारा पॉइजन है भाई. आपको याद है ना, हाफ अ ट्रे मूंगफली में खत्म किया था. Well, okay, well, Vishal ji, hold कीजिएगा. We also have somebody on the phone, right? Let's go to them see what they have to say, okay? नमस्कार, who's this? मोहम्मद मर्चेंट. मर्चेंट साहब, अस्सलाम वालेकुम. क्या बात है? वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास मर्चेंट साहब. तो आज हम लोग वेडिंग बेल्स की बात कर रहे हैं. तो ऐसा फिल्म बताइए जहाँ पे आपने देखा था एक ऐसा. अरे लेकिन आप भी तो नए दुल्हा है ना. आपका कैसा हुआ आपका मैरिज सिचुएशन? बहुत बढ़िया भाई. हमारे यहाँ तो मायू हुआ, मेहंदी हुई, डांडिये खेले गए और वलीमे के दिन जर्दा और बिरयानी और जर्दे के ऊपर वो भी था आपने गुलाब जामुन. सर ये जर्दा बना था भाई. हाँ, लेकिन सर हमें नहीं मिला. विशाल जी, मुझे नहीं इनवाइट किया आपने. नहीं, ये 4 साल पहले हुआ ना सर. हाँ, चलो अब आएगी ना, तब बनाओ फिर से. नहीं, आपको खिलाएंगे इंशाल्लाह. हाँ, बिरयानी खिलाएंगे जरूर. आपकी बेगम यहाँ पे आएंगी. हाँ, आप मेम को आने दो इंशाल्लाह. मेम को आने दो इंशाल्लाह सर. आएंगे डेफिनेटली. हम लोग खाएंगे सर. बट थैंक यू सो मच. तो आपके वेडिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसे ही सेम टू सेम ट्रेडिशन रखा आपने पूरा? हाँ बिल्कुल. माँ बाप भी खुश थे और औरत वाइफ की जो माँ बाप थे वो भी सब खुश थे. गले मिल रहे थे, बच्चे भी बड़े खुश थे, तालियां बजा रहे थे, बलून छोड़ रहे थे. अरे वाह. कहाँ? ये कराची में. वेरी गुड. तो ट्रेडिशनली कराची में हुआ आपका. वेरी गुड सर. बट थैंक यू सो मच मर्चेंट साहब. सुनते रहेगा. वी अदर कॉलर्स वेटिंग इन लाइन. उनके पास जाएंगे, लेकिन आपने वापस फोन करना है. ओके, बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. ये सैटरडे का प्रोग्राम है क्या? सैटरडे का प्रोग्राम नहीं है सर, लेकिन हम आपको बाद में बताएंगे क्या होने वाला है सैटरडे को. ठीक है? जरूर. थैंक यू सर. शुक्रिया. थैंक यू सो मच कॉलिंग अस. विशाल जी, तो बताइए आप, आपने आज कॉल किया. आई एम सॉरी, मोहम्मद साहब आज वाज वेटिंग इन लाइन फॉर क्वाइट सम टाइम, इसलिए पहले उनका ले लिया मैंने. लेकिन मोहम्मद मर्चेंट साहब का तो सुनना जरूरी था कि कितनी दफे अलग स्टाइल हुआ कि सेम स्टाइल हुआ. I'm sure he kept the same style. we wanted to ask कि कौन सी मूवी में दिखाया गया है उनके स्टाइल का शादी? Well, good question, but मोहम्मद साहब कॉल कीजिएगा because Father really wants to know typical निकाह जो होती है कैसे कोई फिल्म में दिखाए क्या कि नहीं. I think so. Yeah, महबूब की मेहंदी is one thing. I think even एक और पुराने ज़माने में जो फिल्म्स होती थी ना, they actually have literally shown the whole procedure of them sitting in different. हाँ, कोई I think it was Jitendra's movie, right? Where they're sitting behind curtains and then one side they will say Kubul hai, all those things. The whole procedure is shown very nicely. वो उसमें भी कौन सी थी? अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी. कौन सा वाला? वही. हाँ, right. He's right. I don't know. I've not seen it. What's that name called? खुदा गवाह. हाँ. Yes, उसमें दिखाया जाता है clearly. They're showing different tents. They are only thing separating them is a particular curtain. And very good. That's nice. तो बताइए सर. लेकिन मूवी में था उसमें जो है वो उसके अच्छा वही होगी महबूबी लीना चंदावरकर की थी. हाँ. लेकिन विशाल जी, आप बताइए आपके in your culture the weddings, has it changed, right? I don't know how often you get to go to weddings because by staying here away from India हमें बहुत कम ही मिलता है कोई ट्रेडिशनल वेडिंग में जाने के लिए. हाँ, अभी तो बहुत टाइम हो गया. अभी आपने याद दिलाया, मैं तो उसको तो भूल गया. हाँ, नहीं जो ट्रेडिशनल वेडिंग से ये थोड़ा यहाँ पे था ना, तो ये थोड़ा अलग तरह से था. बट जो बैक होम जो हम लोग का होता है, तो वो उस टाइम तो बहुत अलग होता था. और अभी कितने साल हो गए, आई हैवंट बीन टू एनी मैरिज. अच्छा. एक शादी में गए थे, हम इंडिया गए थे जब, तो एक मेरी वाइफ की कजन की थी शादी. बट वो भी ऐसा कुछ उसमें फील आया नहीं, क्योंकि सब भाग और लेट और ये सब हो रहा था. इट वाज इन अ डिफरेंट सिटी, तो वो सब वो फील, मतलब शादी जैसा फील आया नहीं वहाँ पे भी.
So because I tell घरों में आता था ना, अभी तो क्या है कि होटल ले लिया, सब अपने अपने रूम्स में बंद हो गए। पहले क्या होता था, शादी में एक बड़े से घर में सब होते थे, एंड यू आर लाइक गद्दे डाल के, वो जो फन होता था लोगों से मिलने का, वो पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, आई डोंट नो. Yeah, in fact, I think the sad thing about the whole thing, right? So I've never been to a wedding which, because हमारे जो मम्मी डैडी थे, वो they used to talk about their wedding being a whole 5-day affair, which started off from day one, पूरे rituals होता था, and then I remember to have gone to weddings when I was a child, wherein they talked about family, क्या आजकल बस चटपटनी पट ब्याह है, एक दिन सवेरे वर पूजा, शाम में उसका what do I call it, so one day booking of chowdhury. हाँ, ये सब जल्दी जल्दी 1-2 दिन में हो जाता है. हाँ. एक दिन पहले कुछ कर लिया, संगीत कर लिया, मेहंदी उसी रात को मेहंदी हो गई, हाँ. नेक्स्ट डे सुबह वो सब पूजा वूजा हो गई, शाम को शादी हो गई, रिसेप्शन हो गया, चलो ओके बाय बाय टाटा. हाँ, तो go on. कोई ऐसा मूवी हो जहाँ पे जैसे आपकी शादी हुई थी वैसे दिखाया गया हो? Any movie which kind of comes close to showing that? हाँ, ऐसे तो जैसे क्या कहते हैं, ये होती थी ना, जैसे हम साथ साथ हैं, that was a movie, the entire movie was a शादी ना. सूरज बरसात always has शादी से. हाँ, उसमें पूरे मूवी में शादी. Oh really? हम आपके हैं कौन? हम Oh आपके yeah. You know, I tell you, Vishal ji, I want to ask you one thing. आपके culture में आप बताइएगा, to the best of your knowledge. Okay, you don't have to be an expert saying this. So, what goes on? Starting from the point of movie like के बाद, मतलब after the first, what do you call, क्या बोलते हैं उसको? The when you get to meet the girl and then you have a 6 months of courtship, or what do we do, right? And then marriage. कुछ 6 month हो, कईयों का ज़्यादा होता है, कई लोगों का कम होता है. You meet them, and then you have something called रोका. What is रोका? रोका मीन्स कि चलो हमने मतलब रोक लिया. हाँ, मतलब बुकिंग. रोका मतलब बुकिंग. हाँ, कर देते हैं. फॉर्मली पुट अ रिंग, राइट. हाँ. तो उसके पहले रोका हो जाता है. इफ यू आर नॉट रेडी फॉर द एंगेजमेंट रिंग, एंगेजमेंट का फंक्शन करने के लिए जो घर में कुछ 4-5 लोग मिलके ही दे जस्ट डू अ रोका काइंड ऑफ थिंग. Commitment. Okay. Then Not temporary deposit. Temporary deposit. Hold. Temporary hold. Hold, yeah. बयाना जैसे नहीं देते, बयाना दे देते. हाँ. बाद में क्या होता है? When is actual wedding day? वो refundable होता है क्या? अच्छा, वो ट्रांजैक्शन होता है? पैसा ट्रांजैक्ट होता है obviously. Really? Yeah, they exchange stuff, right? रोका, they exchange. क्या बात है? Really? Yeah. तो अगर नहीं होगा तो कई लोग दे देते हैं, कई लोग नहीं करते. तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, जो है ना, रोका फिर मींस इट्स काइंड ऑफ नाम के लिए, रिचुअल के लिए. हाँ. कई लोग रोके के साथ ही वो कर देते हैं एंगेजमेंट और रोका एक ही हो जाता है. हाँ. देन डू द. हाँ, लेकिन शादी का क्या होता है? हाँ, जरूरी नहीं है कि कई लोगों की जल्दी भी हो जाती है, कई लोगों का लेट होता है. मेरे साथ क्या हो रहा था कि मेरा तो जिस दिन एंगेजमेंट हुआ, घर वाले बोले, सब लोग बोल रहे थे कि लेट्स गेट मैरिड इन लाइक 2 days. Oh wow. Okay. 2-3 days नहीं Wow. करते. So क्या हुआ? First day क्या हुआ? What happened in the first marriage day? Was it multiple days or was it one day only? मल्टीपल डेज होता है. हाँ. देन नहीं हुआ वो, फिर 6 महीने लग गए. Okay. फिर जो फर्स्ट डे में क्या होता है, सब अपने घरों में, लड़की वालों के घर में अलग होता है, लड़कों वालों के घर में अलग फंक्शंस होते हैं. तो दे डू. हम लोगों ने शायद हम लोगों ने पार्ट रखा था, रामायण का पार्ट 24 आवर्स वाला. ऐसे ही उनके घर में भी था. तो जैसे अगर सिख फैमिली है तो उनका पार्ट 36 आवर्स का होता है, कुछ ऐसे उनका लंबा होता है. Wow. कंटिन्यूअस. हम लोग का रामायण का होता है, तो वो रामायण वाला 24 आवर्स में खत्म होता है. हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, बिकॉज़ आपका लंबा शादी है. एक और कॉलर है, तुमको लेते 1 मिनट होल्ड कीजिएगा. नमस्कार, who's this? Hello. PAMPAM also Baba and Faltu Rani and Vishal जी. हाँ, PAMPAM. विभा जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास विभा जी. Awesome. हाँ, तो विभा जी आप बताइए, आप एक्चुअली कॉल किए टू शेयर अबाउट समथिंग.
शादी का टॉपिक है आज. हाँ शादी का टॉपिक है and we're asking about whether your wedding was influenced by any Bollywood scene or was there any movie in the Bollywood scene which actually matched your wedding? Well, ours was a typical Punjabi wedding. I kind of overheard Vishal ji talking about his उनका कैसा हुआ. हमारा भी similar था, पर हमारा ऐसे हुआ था कि the roka, like he said, happened first, and in उसके बाद we were engaged, and then the next day was the wedding. Oh, same as yeah. हाँ तो विशाल जी आपको So वैसे very, हुआ very ना? fun. विशाल जी आपको वैसे हुआ क्या? नहीं आपने रुकना, you had waited for some time. Okay. आपने वेट किया था विशाल जी? I thought yours was really fast ना. I didn't want to get married next day ना. हाँ ऐसे बोलो. विभा जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा. We'll jump back to you after some time, but let's go ask थोड़ा और आगे बढ़े आपका स्टोरी को. विशाल जी तो after रोका what happened? आफ्टर रोका एंगेजमेंट रोका हमारा एक ही दिन था, बट एंगेजमेंट के बाद 5-6 months एंड देन पार्ट हुआ. पार्ट के बाद वो पार्ट का किसी मूवी में नहीं दिखाते हैं. No, I never seen that सिर्फ happen. नाचना गाना मेहंदी दिखा है. फिर हमारे पार्ट जिस दिन खत्म हुआ उसी दिन शाम को संगीत था. हाँ. संगीत में क्या होता है? संगीत Does it happen in both places? Does it happen in both the boys' house and the girls' house? हाँ, के घर में होता है, अलग अलग होता है. हाँ. पर कई लोग अब इकट्ठा करते हैं, वही कॉकटेल पार्टी और वो सब करते हैं. Okay. Hey, wait, that is something. Okay, that is a Western influence, right? It's not something which is. तो मोस्टली करते हैं, तो that is these days जो लोग करते हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं दोनों. Okay. लोग मिलके at the same place. पर हम लोग का अलग अलग ही हुआ था अपने अपने घर में. हमारे ढोल वोल बजते हैं खूब. तो खूब ढोल वाले आते हैं. उसी दिन हमारे मेहंदी भी हो गई थी. उसी दिन रात को फिर मेहंदी हो गई. Deepa. एंड Deepa. नेक्स्ट डे शादी थी. I can't take 2 calls on WhatsApp. Hold कीजिए. नेक्स्ट डे शादी के बाद देन वी हैड Okay, I call back. हाँ. शादी के बाद वी हैड रिसेप्शन. शादी के राइट बाद, इमीडिएटली बाद. शादी वाले दिन तो एक रिसेप्शन होता है ना. हाँ. दिन फेरे होते हैं. उसके पहले एक बारात जाती है लड़की वालों के घर में. और आपका शादी से पहले भी एक रिसेप्शन है? शादी के बाद. शादी के बाद. हाँ. Interesting. तो क्या होता है कि कई लोग अब आप सब लोग क्लब भी कर लेते हैं. हाँ. बट एक हम जो बारात जिस दिन जाती है, सेहरा वेरा बंद के घोड़ी पे बारात जाती है लड़की वालों के घर. हाँ. और टाइम वही खाना पीना, फेरे, एंड देन बाद में फेरे रात को ही होते हैं मोस्टली नाइट में. And is this something? So your wedding was typical to a North Indian style or Punjabi style? पंजाबी वेडिंग. वो फेरे वेरे हो के फेरे वेरे चलते हैं, पूजा होती है, एंड देन सुबह जाके डोली वापस आती है घर. मतलब लड़की की डोली आती है अपने ससुराल के घर. ससुराल. हाँ. एंड वो सब रिचुअल होता है, रोना धोना सब होता है. वो सब रोना सब होता है, सब हुआ भी था. अच्छा. हाँ 100%. ज्योति जी वो इतनी इमोशनल है, इतनी अटैच्ड है उनकी फैमिली से, तो ऑब्वियसली. Okay, now let's go back to विभा. राइट. विभा जी आप बताइए, आपका कोई अलग था कि ऐसे ही था? एंड आप भी रोए थे क्या? हाँ, हमारा भी सिमिलर था. हमारा बस ये था जो हमारा संगीत और कॉकटेल का था. It happened at my husband's house because हम लोग we were not local. Okay. So the girl side, boy side, both sides attended that together. Okay. And then I think what was a little different about my wedding was my mother-in-law was very broad-minded. और जितने भी rituals हुए थे, she wanted me to attend all of the rituals, even the ones that the girl side is not supposed to go to. So because I had not actually experienced a proper Indian wedding, so मेरी अपनी शादी was like, I think the first Indian wedding that I experienced, like मतलब पूरी wedding जो जितने भी rituals, वो जो चूड़े का होता है या मेहंदी का होता है. So my own wedding was the first proper desi या Punjabi wedding that I experienced. And most of the people, my mother-in-law, she I mean, they don't believe in alcohol and stuff like that, but my husband's cousins
smuggled some alcohol into the parties and even into the actual wedding. So, actually, it was fun. It was a lot of fun. So anything filmy in the whole situation? Was there any, or do you know any film which actually reflected what you went through? Thoda bahut, I think, I don't know if you guys remember, wo jo Vicky Donal movie thi, usme, they showed how, some alcohol was smuggled into the wedding, and then fir wo rum rum whiskey wala gana aata hai. So, wo thoda bahut hua tha hamari shaadi mein. And then, another interesting thing that happened was our wedding happened right about the time released. So a lot of the music that played at our wedding was the songs from Mohabbatein, and then a lot of my husband's cousins, a lot of the guys were all in Shah Rukh Khan mode with their suits and those patle frame पैरों में बंधन है पायल ने मचाया Very good. So let me ask you one thing. शोर की बात होती है, मुझे दुल्हों की बारात जो होती है ना, तो आपको याद है आपके बारात में क्या हुआ था? कोई आपका कोई चाचा या फूफा कोई ऐसा और करण जी घोड़े पे आए थे, घोड़े पे विशाल जी की बात कर रहे थे. अच्छा विशाल जी, तो आपको याद है कोई आपके वेडिंग में कोई ऐसा कोई डांस सीक्वेंस जो है जो मैच हुआ मूवीज में दिखाते ना, वन ऑफ द uncles go Nagin dance and all. And they'll have one uncle or one aunt who'll be the troublemaker. All the movies they show that, right? All the जरूरी होता है ना, that is kind of a ritual ना, ये किसी को तो नाराज होना होता है ना. Oh really? नहीं, seriously? और वो तो उसके लिए तो वो ही मशहूर होते हैं ना. Oh really? I didn't know it was a ritual. Ritual नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई शादी नहीं होगी जिसमें कोई नाराज ना हुआ हो, तो किसी का मुंह ना बनो. It's not a ritual, I'm just saying. So yeah, okay, हम लोग एक और चीज देखते हैं मूवीज में जो एक्चुअली होता है कि लड़के वालों का ठाट होता है, मतलब they be the person like, तो ऐसा भी आपका भी होता है क्या? मतलब you have been real life में है ऐसा? हाँ होता है. Oh. अरे वाह, देखा अभी भी है उनका ठाट, देखो. लड़के वालों का अपर हैंड तो होता है यार. तो बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जताओ. I mean, जताने की जरूरत नहीं पड़ती, ना पड़ी हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं पड़ी. बट it's मतलब it's not a bad thing ना. तो I don't know, it's not a bad thing. No, I know one more thing. क्योंकि लड़की वालों के घर आप जा रहे हो, you're the host. लड़की वाले होस्ट होते हैं and you're the guest. Host is always little bit विनम्र होना पड़ता है ना host को. Correct. It doesn't make the guest be the correct. और या धमक नहीं होती. Guest is विनम्र. Correct. Yeah, so thing is, I think हमारे कल्चर में भी ना अतिथि देवो भव. So when you come as a guest, you obviously are treated like the थोड़ा सा विनम्र होता है. So one more thing I want to ask you, because you talked about the North Indian wedding, and Vibhaji, you also can chime in on this one. I've seen in movies, मुझे actually उतना experience नहीं है North Indian weddings attend करते हुए, तो weddings में उतना experience नहीं है मुझे, लेकिन एक पगड़ी होती है, पगड़ी डालते हैं जो generally I've seen movies of Amitabh Bachchan where they give total value to the पगड़ी. क्या है वो ritual कुछ है, सच्ची में कुछ है, ऐसे लगाया उन्होंने? जो दूल्हे के साइड वाले जो होते हैं, they all wear a पगड़ी. सबको, सब जो बारात में जो मेन मतलब अंकल और वो सब होते हैं, they all get to wear a पगड़ी. तो यही है. अभी पगड़ी is kind of वही कि भाई ये हमारे distinguished people हैं. Oh, guest kind of the you identify them as the, this will be the uncle. Oh, this is the royalty of the wedding. Royalty of the wedding, who should not mess with. Okay. तो मतलब जैसे मेन पर्सन हो गए ना, भाई हो गया, बड़ा भाई हो गया. अच्छा, आप घोड़ी चढ़े थे? हाँ. अच्छा, आपको कोई डर नहीं लगा था? आप पहले बहुत डर लगा था. पहली बार तो चढ़े थे घोड़ी के ऊपर. हाँ. एंड देन वो ढोल वाले को घोड़ी वाला लेके आया और ढोल बजाया तो घोड़ी नाचने लगी. वो कुछ पता कि घोड़ी ना भैया मैं तुझे अलग से पैसे दे दूंगा, घोड़ी को मत नचा. लेकिन आपके लगता है आपके यहाँ पे लाइव बैंड था, राइट? वाज अ लाइव बैंड? ढोल वो ढोल वाले आते हैं, बैंड वाले आते हैं, जो बारात पूरी जो लाइट वाइट लेके. आजकल तो मैंने देखी नहीं, पता नहीं है. आई डाउट. कुछ साल पहले गए तो उसमें नहीं थी ये वाली ऐसी बारात. आई थिंक हमें बचपन में याद है कई. आजकल तो वो फेरारी में आते हैं या वो कन्वर्टेबल. इसकी कजन की शादी में हेलीकॉप्टर
तो लड़के वाले दोनों एक ही होटल में रुके हुए थे सब। हाँ 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 हाँ। तो हाँ। कुछ था ही नहीं, ऐसे बारात जा रही आ रही, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा कुछ। वाओ, तो वंडरफुल। सेरा या सेरा बट मेरे को 1.5 किलो का चांदी का मुकुट पहनाया, 1.5 किलो, वाओ। एंड 1.5 किलो का। बड़े फूलों के सेरा बनाया। ओहो, That was too heavy, and I had to sit Yes. with it until like 6 in the morning or something. वाओ। शाम वजह से पहना के मेरा तो सिर चकरा गया था। हाँ, वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच। इनफैक्ट जो भी आप शेयर कर रहे हो हमने कहीं कहीं पे ग्लिम्स किया है हाँ। इंडियन सिनेमा में, नॉट इन वन मूवी एज सच, मल्टीपल मूवीज, राइट? एक ऐसा मूवी बनाना चाहिए। और बॉलीवुड मेक अ नोट, हाँ। द पेरिल्स ऑफ द वेडिंग। Yes. बेसिकली क्या क्या झेलना पड़ता है। क्या? 1.5 किलो का मुकुट, क्या? फिर And वो नाचने वाली इतनी देर, घोड़ी। हाँ, नाचने वाली घोड़ी डर डर के कैसे। एंड अगर नहीं, और लड़कियों के लिए भारी भारी लहंगे जिसमें आप हिल भी नहीं सकते, and then you हाँ। have to do the feras in those heavy outfits. I also want to Yeah, ask but they you. look pretty, at least. Okay, hold on. Since we're getting a female perspective here, विभा जी, Yeah. आप बताइए, आपके शादी में आपको खाने को मिला? I always wonder when you have. But we ate after we ate before our feras. हाँ. हाँ, खाने को मिला हमको. They Ah. brought a special plate for us, and Oh, we okay. ate out of the same plate. Probably the first and last time. Yeah, it seems like as though they have their hands full with all those things. Where will they eat? No, that's the thing, right? If you ask Jyoti ji, I think she'll say that she didn't eat because a lot. Yeah, I think she had told me, if I'm not mistaken, she had not eaten almost 24 hours. She hadn't eaten वो anything. nervousness में नहीं खाई उन्होंने. नहीं, उसने थोड़ा बहुत खाया था। I mean, अपने आप तो नहीं खाया था। खिला गया तब था. क्या है कि जब सब लोग खा चुके होते हैं, then before feras, as Vibha mentioned, कि अलग से टेबल लगाते हैं। हाँ. दुल्हन, मम्मी पापा, सबके उनके मम्मी पापा, ब्रदर्स, क्लोज, आई मीन फैमिली, हाँ. तो वो सिस्टर, उनका हस्बैंड, बच्चे, तो वो सब टेबल पे होते हैं, देन they come and serve you at the table. हाँ. जो So I'm just thinking about how. हाँ. Usually लड़की के माँ बाप खाना नहीं खाते because वो कन्यादान के बाद I think वो फास्ट रखते हैं. ऐसा And then कब I खा know ले- my parents कन्यादान के बाद या जब सुबह हुई थी, फेरे हमारे हो गए थे early morning, उसके बाद I remember my mom and dad ate after that. Oh, wonderful. वो टेंशन में नहीं खाए होंगे विभा। क्या विभा क्या करने वाली है? कई लोग नहीं खाते, फर्क हो but जाए. कई होता है कि जो दूल्हे की मम्मी होती है, she sits in the feras, but या कई फेरे में बैठती है या नहीं भी बैठती है, she keeps her legs in कच्ची लस्सी, जो दूध का और पानी का ना, वो दूध पानी में पैर डाल के बैठी रहती है, और जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक वो बैठी रहती है ऐसे। Oh, Why? really? What is the? I don't know the significance, but I'll ask my mom why. हाँ, please ask because movie दिखा नहीं रहता है सबको. हाँ, I'm not seen it in a movie. She did sat दूसरी तरफ मुंह करके ना, उधर करके। हाँ. Okay. And Really? हाँ, ताकि हाँ, I don't know what the reason. पूछ This के is मैं बताएगा जरूर. really- हमारे में नहीं हुआ था ऐसे. तब सब ठीक ठाक हो जाए करके। हाँ. She keeps on praying, ऐसा होता है। Oh my Wonderful. God. But thank you so much for chiming in today, Vishal ji. We do have other people waiting to get on because अभी North Indian ritual के बारे में बात की हमने, South Indian की तरफ गए ही नहीं because Indian और cinema. बहुत सारी चीजें जो पहले होती थी, जब हम लोग बचपन में जाते थे शादियों में, हाँ. वो हमारी शादी में नहीं हुई, और Oh, wow. जो शादी में हुआ वो आगे अब तो बिल्कुल ही नहीं होता। We're losing out culture, right? We are losing out. हाँ, चलो सर. मेरी शादी में 100% ritual type जैसे आपको चाहिए था ऐसे बनाएंगे, ठीक है? Hello. हाँ. आपकी शादी में हम दोनों करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ इंडियन रिचुअल्स दोनों. विशाल जी देखो, ये दो लिमिटेड है, हम चारों तरफ की बात कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट स्टाइल में 3 4 बार हम लोग फेरे लेंगे. क्या बोलते हो? ठीक है. हाँ, तो ऐसे प्लान करेंगे हम लोग. ओके Okay. विशाल जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. सुनते रहिएगा सर, वी गो सी अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव एज वेल. एंड यस बंचर, इफ यू वांट टू जॉइन अस, वेरी सिंपल, कॉल अस 40891247. तो विभा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. एंड यस, अगर आपने बोला आपके सो डिड यू हैव लाइव बैंड इन योर, आई एम श्योर यू हैड लाइव बैंड राइट इन योर वेडिंग. हेलो विभा जी,
उन्होंने रख दिया ऑलरेडी फोन. She hung up. Okay, anyway, मुझे give us a call back. दीपा जी actually apologize. आपने कॉल करने बहुत ट्राई किया आपने. Unfortunately, we had the lines occupied. But do give us a call back because दीपा जी बोल रही हैं फिल्मों में ज़्यादा they only show North Indian weddings, and she claims that there are not many South Indian weddings. Huh. But I say there are a few movies actually talked about the South Indian wedding ritual. हाँ. कौन से मूवी याद आ रहे हैं आपको कॉल कीजिएगा. लेट्स सी इफ यू कैन थिंक ऑफ इट बिकॉज़ अभी तक जो बात किया हमने हम शो पे वी हैड विशाल जी कम इन चाइम इन अबाउट हिज ओन पर्सनल लाइफ. थैंक यू सो मच दैट सर. एंड वी आल्सो विभा जी एक्चुअली कॉल इन एंड शेयर हर personal experience about the marriage, and turns out to be North Indian experiences, Punjabi and North Indian, right? So pretty much movies have given us a lot of songs which actually even play in different places, right? एक फिल्म आई थी जहाँ पे संगीत का बात किया जाए तो वो कल हो ना हो फिल्म था ना फालतू रानी, जिसमें हमारे शाहरुख खान जी is getting together a Punjabi and a Gujarati family together, and they have a sangeet kind of a mixture, and you can see how that changed the word, that changed the culture to move away from band baja to DJ baja. Yeah. So and nowadays I hear stories of people who are DJs investing in speaker systems and making a living out of it. That's true, Altu Baba. And you know, DJ का जो business है इंडिया में बहुत बड़ा business है. बहुत बड़ा business है. And शादी का business is like amazing business in India. So I think लेकिन किसी ने हमें बताया कि जो शादी है, right? It is nothing that is actually what you see in the video. The shadi is done for the video apparently. I was coming to that फालतू नहीं. क्योंकि एक ज़माना था जहाँ पे शादी होती थी for the crowd, for the community to see. Correct. Witness and be witness of that union, ताकि there can be some kind of moral standards applied on the culture, on the couple, right? Coming together, and there is somebody who actually responds to the couple when they have need, right? And at the same time to get the blessings of everybody involved. Same thing. Now blessings, they have the input and they make sure that the couple stays together, supporting them as they required, right? But if you look at it, slowly it changed. Wedding became something only for the near and dear, right? And then later on it became like a Bollywood style wedding, which would be destination wedding only for the video. Correct. Right? Like for instance, when our famous Bollywood couples who went to destination weddings in Italy and other places spending only with the close friends, because they know they actually have a lot of people on their Facebook and social media, right? So for them, they just supplied them with the photographs and the video. People went crazy. The voyeur system in that, right? I think it's not just that. It's also a money-making opportunity, na? Jaise paparazzi, who gets the rights, who will pay the highest to get their wedding photos, who will pay the highest to get exclusive inner circle photos. Yes, who will get the highest money paid for the pakoda which they have on their plate. Yes. And what kind of chutney was served along with the pakoda. Yeah, and what type of zari was used in her lehenga. Speaking of zari, lehenga and Deepika Padukone. Yeah. Let's welcome our Deepika Padukone of our community here. All the way from Beyonce. We're talking about Deepa ji. Welcome Deepa ji. कैसे हैं? Hello, Papa, Deepa ji. Deepa ji, आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा ना? आज आलतू बाबा शादी के मूड में आ गया. क्या? हाँ, शादी के मूड में आ गया. नहीं शादी के मूड में नहीं आएगा, मतलब शादी के बारे में बात कर रहे हैं, because I realize that Indian cinema does a lot of because Hindi industry, they do a lot of exposure into the culture of the North Indian culture and ignore the South Indian market, which actually also has a huge impact on their pockets, right? हम लोग भी जाके consume करते हैं. We don't see South Indian weddings being depicted on the exactly. वही मैं बोल रही थी, इतने सारे like and also जो फालतू रानी अभी बोल रही थी, I know it is so true ना, like वो शादी नहीं हुआ कि रेड कारपेट हो गया किसी अवार्ड सेरेमनी का, क्या पहना, कितने पैसे का पहना, किस डिजाइनर ले, दैट्स नॉट द पॉइंट. कि अगर बताना ही है तो वो मैं हर एक फेरे का महत्व बताओ, हर एक लाइक स्टेप ऑफ द वे, ईच रिचुअल का इम्पोर्टेंस बताओ, तो उससे लोगों का नॉलेज बढ़ता है. लाइक Saptapadi, all that, why it is done, how it is done, everything. Seems like you have good experience with this one, Deepa ji. तो बताइए ना, सप्तपदी क्या होता है? हाँ. नहीं मैं बोल रही हूँ. बोलना. दीपा जी. अरे मैं बोल रही हूँ उन लोग. अरे अगर हम
see मूवी में ऐसे दिखाया ही नहीं ना, मुझे भी थोड़ा थोड़ा आइडिया है. आई एम नॉट सेइंग आई नो एवरीथिंग. मैं बोल रही हूँ ऐसे लाइक पीपल लाइक मी. देखो अभी हमको भी मतलब ठीक से पता नहीं रहता ना यूजुअली. करेक्ट वेल साउथ इंडियन आई वुड से हमारे इसमें actually like you guys said like even in South India they have five days of wedding actually. आजकल 2 ही दिन का हो गया अभी. Correct. So, let me ask you, आप अपने खुद का experience में बताइए, how many days was your wedding and what were some elements you can share with us on air? Yeah, and it's different na, even in the communities itself it's different, but some basic tenets are the same, right? हाँ, तो आपका बताइए. 2 दिन का ही था हमारा भी शादी. एक दिन मतलब जैसे रुको तो हम बोलते हैं मतलब इधर गोल्डू दु आई मीन इट्स लाइक मीटिंग ईच अदर. तो फर्स्ट डे इज लाइक वेलकमिंग द ग्रूम्स फैमिली. तो मीटिंग ईच अदर मतलब दूल्हा का भाई दुल्हन के भाई से मिलेगा, दूल्हे के पापा दुल्हन के पापा से मिलेंगे. दे एक्सचेंज कोकोनट एंड दे पुट स्वीट इन ईच अदर्स माउथ. दैट्स हाउ दे मीट ईच अदर, इंट्रोड्यूस ईच अदर. मैं कौन हूँ, मैं इसका क्या लगता हूँ, ऐसे. That's how it is. अच्छा. Like pretty much like the Roka system. Yeah, it's रुको तो बोलते हैं हमारे यहाँ. Yeah, I think the same meaning. And then what happens? What happens after that? और उस दिन थोड़ा पूजा रहता है और हमारे यहाँ. That is not Roka system, na. Deepa, that's not Roka. Roka is already done. Roka is before Sagai, man. Engagement, ये Roka का नहीं है. This is all शादी का first din. Okay. It's a formality because you should know who's the person in charge. Yeah, because the engagement is not always the people who are the fathers who make the decision. It's the elders of the family, right, who make the decision. और engagement थोड़ा कम पैमाने पे होता है ना. शादी में जो मतलब पूरा फैमिली आ जाता है तो एक दूसरे को पहली बार मिलते रहेंगे. तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, मैं क्या लगता हूँ, रिश्तेदार कैसा हूँ. एंड ऑल्सो उसके बाद गले मिलते हैं. एंड हमारे यहाँ क्या होता है, मामा खुद लड़की को लेके आता है मंडप पे, स्टेज पे. दैट इज द रिचुअल टिपिकल. और एक और भी एक्चुअली दीज 2 आर मेन वेडिंग जो होता है. उससे पहले क्या होता था, 5 दिन यानी कंटिन्यूस. फर्स्ट डे इज लाइक भगवान का प्रसाद, जो घर के भगवान का देवरूटा जो हम लोग बोलते हैं. तो घर का जो मेन देवी देवता उनको डिब्बे में मतलब सेफली रखते हैं. उनको निकाल के उनका पूजा अभिषेक सब करके एंड यू हैव ओनली फैमिली इवेंट रहता है वो. सो वो लड़के वाले अपने घर में करेंगे, हम लोग अपने घर में करेंगे. एंड नेक्स्ट डे रहता है, उसी दिन चूड़ी डालने वाला रहता है. लाइक we have a bangle day, like all the ladies wear green bangles the same day. And they do puja of वड़कल पूजे, मतलब जो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, जो कूटते हैं, ये रहता है ना grinding, all those stone things. So basically it's like saying like the preparation has started, like शुभ घड़ी आ गई, अभी इसमें लड्डू वगैरह सब बनेंगे. तो आजकल तो सब मिक्सर में वगैरह बन जाता है, लेकिन in old days they used to do first puja of that pistol and mortar. उसके बाद उसमें थोड़ा शक्कर ऐसे for namesake they do it. And also गणपति पूजा होते है उस दिन, कि अभी आज से 5 days whatever the functions happen, सब सुख शांति से हो, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए. एंड उसका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत सुंदर है. लाइक अ लेडी शी मेक्स द गणपति विद द आटा, द सेम आटा. तो वो आटा, वो छोटा सा गणपति बना के उसको डब्बे में रखते हैं 5 दिन तक. तो शादी के बाद रिसेप्शन होता है आप लोगों में? शादी के बाद विदाई होता है, लेकिन शादी शादी के बाद रिसेप्शन होता है. और शादी में हमारे शादी में क्या हुआ कि वी हैव, जैसे नॉर्थ इंडिया में जूते चुराने का रिवाज है. मैं बोल रही थी कि अरे हम बिकॉज आई फॉरगॉट, एक्चुअली मेरे बुआ की शादी में भी हुआ था, लेकिन मैं जब बहुत छोटी थी मैं भूल गई थी. तो मैं बोल रही थी ऐसा कोई रिचुअल अच्छा रहता है, ऐसे मैं बोल रही थी. तो मैं हमारे यहाँ जो क्यूमिन सीड्स का एक छोटा सा ये गट्टा रहता है, जो दूल्हे को पकड़ के बैठना रहता है थ्रू आउट द होल सेरेमनी ऑफ द मैरिज.
पर वो उसके हाथ में होना चाहिए, उसके साथ वो ये भी रहता है, टर्मरिक का रूट भी रहता है। Oh wow, I've never heard of this. किरगी कंटू बोलते हैं, तो वो पकड़ के, अगर वो लड़की वालों ने उसको चुराया तो दूल्हे को पैसा देना पड़ता है। अरे वाह, कोई चुराया कि नहीं? गोपाल सही पकड़ा ना? नहीं, और हम मेरे सारे कजिन्स और मेरे बहन ने सबने मिलके चुरा लिया। अरे यार। And I helped them. Oh! दीपा, मैं बोलूं क्या? गोपाल बोल रहे थे, अरे यार दीपा तो मैं दिल चुरा लिया, ये क्या चुरा हाँ, लिया? वही तो मैं बोलने वाली थी, गोपाल तो ऐसे चुरा के दिल मेरा ऐसे दे दिया क्या? Very good. ऐसा कुछ नहीं, वो ना क्या हुआ ना, हम लोग ऐसे बैठे हैं, वो सब मंत्र पढ़ रहे हैं, प्रीस्ट एंड ऑल, एंड मुझे ध्यान उधर नहीं है, मुझे ध्यान वो गटरी पे है। मैं उनको ऐसे इशारे कर रही हूँ, जल्दी आओ, इधर है, देखो। ये होता सलमान खान के फैंस का ही होता है, आप लोग ना फिल्मी चक्कर में सही पड़ जाते हो। लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, वन वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन पंजाबी वेडिंग एंड साउथ इंडियन वेडिंग। आपके वेडिंग में फेरे होते हैं? या ऑफ कोर्स होते हैं। फेरे होते हैं? नहीं, नॉट ऑल वेडिंग्स देयर आर फेरा। अग्नि को साक्षी मान के सब लोग शादी करते हैं। हाँ तो बाबा, लेकिन द यू नो द in South Indian weddings, the saptapadi, and then it is the mangalyam that they tie, right, which is the 3 knots that they tie. That is what is signifies the marriage. In North Indian wedding, in Punjabi weddings, it is the phera that signifies that they are married. Yeah. Hey, but I'll tell you one thing. I want to ask you, Deepa ji. Right, Deepa? Yeah. अभी मैं सोच रही हूँ, I forgot. हाँ, हमारे इसमें फेरे नहीं होते हैं. We don't take 7. Right, actually, I don't remember taking a fera actually. You go around you take 7 steps around the fire. करते हैं, लेकिन I think कुछ उसके साथ ये सप्तपदी भी उसके साथ एक राउंड मार के वो ऐसे जो ये रहता है ना beetle nut, you have to with your feet you have to move it like each saptapadi, like you know 7 one step ahead ऐसे करके। Yeah, very good. So, but let me ask you this. So the question I had for you was, I totally lost my chain of thought because I was imagining. अरे वो बोल रही थी ना, वो गटरी चुराने में वो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, great. Let me ask you one thing. Now let's bring a connection to the Bollywood which you love and the cinema which we love. I'll tell you one thing. Salman Khan has never done a movie where he talks about a South Indian wedding. How do you like the guy? Whereas Shah Rukh Khan has done a movie with a South Indian wedding in it. Yes. The 2 movies of Shah Rukh Khan. Yes. No, think about it. Salman Khan has not done a movie which has shows about a wedding. South Indian wedding. वो रोल मिलेगा करेगा। हाँ, रोल मिला था उसको, नहीं किया उसने। कौन सा वाला? नहीं किया। अच्छा, शाहरुख का कौन सा था? शाहरुख का है, शाहरुख का बताऊं मैं? शाहरुख का बताऊं? derailing the topic. No, शाहरुख का बताओ। 2 फिल्म है शाहरुख का जहाँ पे उसने साउथ इंडियन वेडिंग दिखाया। अरे हाँ, अरे उसको मिला वो मूवी। नहीं मिला नहीं, उसने किया ऐसा ना। क्या सपोर्ट करते हो? रेड चिलीज, Salman Khan films, 2 different entities. They have a say, Deepa. Yeah. When they have a say whether Kashmir Files can be broadcast on their own on their network, then yeah. So he definitely had a say if he wanted to. But he didn't do it, Deepa. Dekho. But Salman Khan's never played a South Indian role, right, Altu Baba? Neither did Shah Rukh Khan play South Indian role. Fir? Yeah, the movie Chennai Express is not South Indian. He gets married to South Indian. Correct. And they show Deepika Padukone in that. And of course, in the movie Ravan, he is South Indian. Of course, he plays South Indian guy. In that they show wedding. Yeah. And I was very happy, at least like कि इसमें movie में like you know 2 states. I wish they had shown more of it. लेकिन सिर्फ ड्रेसिंग के तक ही सीमित रखा उन लोगों ने भी। Correct. Like वो साउथ इंडियन साड़ी पहनेगी तो साउथ इंडियन हो जाएगी। Like you are right. Actually थोड़ा उसको deeply दिखाना चाहिए किसी मूवी में. At least these people will know. Yeah, because there's a lot of appropriation. So सोचते हैं कि see there's a lot of South Indians in media in America right now. Lot of first generation South Indians. You know, like the actresses because the dark skin, the straight hair, you know, the olive skin and straight hair, that's considered very big eyes are considered exotic, right? So a lot of these actresses are there, and for some reason they cast them as the Indian belle, right? And then they go based on, I think, the actress's feedback, and these people don't even tell you if it is a Punjabi role, you don't call your father Appa.
right? If you're playing a Punjabi, you call Baba. Papa or Baba. not Baba. Baba also can work. No, Baba is in Marathi. It's like I was like really. You don't even bother talking about it. वो प्रियंका का दिमाग खराब हो गया पता नहीं. Priyanka ही नहीं. I'm talking about like a series which is supposed to be one of the most lucrative series that has netted a lot of money. The Bridgerton series, right? जो second season आया. I could not believe that there's so much. It's such a small thing. How can you not find out what you call a father in the Marathi culture? Yeah. How is it? नहीं हाँ फालतू नहीं वो ये फालतू की चीजों पे बहुत रिसर्च करेंगे. हाँ. उसको how realistically you can graphic design this and all that Yeah. करेंगे लेकिन the root Hey, fundamental. no, they can research. They can research about the suppressed or repressed sexual urges of the particular person. Yeah. But they can't research deeper in terms of what exactly. What is that culture about, and how do you dress in that particular culture? That's true. Why do they show when they have to dress including people like this? What Mindy Kaling? Yeah. She calls herself Kaling. Mindy Kaling, she has produced a वो series. तो बस छोड़ो वो तो नहीं फालतू नहीं उनको ऐसे like bashing culture के लिए उनको ऐसे exotic like what you said उनको लेके आएंगे उनसे बुलवाएंगे. हाँ. Then it like people believe the people who are watching like अरे वो खुद ही है और खुद बोल रही है. That means it's true. Yeah. That's how you are like spiraling the thought inside the audience brain. But again, Deepa, your next generation is going to believe them, not you, right? Because they are influenced by pop culture. जब तक है जहाँ मैं fight करूंगी. Don't worry, Deepa. Don't worry, Deepa. You can use us as a reference point here. We are going to be definitely questioning all these things. And when we make our own productions, we'll talk about all those things. One more thing I want to say, like South India में मंगलसूत्र का जो महत्व है ना, like and also I forgot, like 3 गांठ बांधना चाहिए वो Correct. है उसका meaning. हाँ. Like now वो slowly it's all going away. Like people use like ready-made मंगलसूत्र डाल देंगे बस. Yeah. And the other thing I want to ask Deepa is मैं विभा से पूछी लेकिन she didn't answer the question. जब आपकी विदाई हुई रोए क्या? Of course. Of course. Deepa, I can't imagine. I can't imagine Deepa Deepa crying. खुशी गई. और seriously मैं इतनी इमोशनल अरे फालतू रानी मैं हर एक बात पे रोती हूँ और वो टाइम पे नहीं रोऊंगी क्या. रोती हो आप तो आधे पंख रुलाते हो मुझे. But anyway, Deepa, yeah. पहली बार किसी को रुलाया फालतू बाबा अच्छा लगा. अच्छा हमारे गैंग है, बड़ा गैंग है हमारा. दीपा रुलाने वाले, दीपा रुलने वाले गैंग. But yeah, Deepa, thank you so much for calling in today. In fact, it was nice actually to listen to you. And of course, next time please जल्दी join हो जाओ. अच्छा दीपा मैं बताना चाहती हूँ the significance of the 3 knots. So sweet, Faltwani. South Indian weddings में, I don't know if it happens in North Indian weddings, generally the person who helps is the sister of the groom who will help tie those knots in this thing. So basically the first knot is supposedly that manasa, kaya vacha manasa, right? So it is basically from my heart you're taking that vow that you will be bound from your heart, from your mind and heart. You're bound to that person. And then the next one is the vacha. By giving my word to you through by word, I would... the commitment that I'm coming into your family and I'm bringing together 2 families. Not that I'm becoming part of your family, but it's bringing together, which a lot of people miss. It's actually about bringing together 2 families. And the third knot is karmena, which means basically everything that I'm going to do is going to signify our union going forward. Everything that I will do, I'll do it as a couple. So that's the... so actually speaking in colloquial term, 1 knot is for me, 1 knot is for you, and the third knot is for everybody. Yeah. Actually, that's what it is. In simple terms. Yeah, but I'm a simple man. I'm simple. I'll tell you how cultural appropriation works. If you Google it, and I did, so if you Google it, first thing that comes is it is signifying the wife's obedience to the husband. The wife's obedience to the second knot is for the husband's family, and the wife's obedience for the whole community. No. Obedience? What the heck? Yeah. Seriously? But I think there's okay. Here's the thing. So. Culture
butchering, you know. Yeah. Correct. And actually, Deepa, that's why we have shows like this. Why we talked about it, we talk about a lot about Indian cinema and everything we talk about, but still we always say that Indian cinema has a responsibility towards the community, towards society, to depict and show these things so our next generation understands much better and leads a life of awareness about their own self. Yeah. जब हमारा self care नहीं होगी ना, they won't have any kind of identity at all in the first place. They lose themselves. And also बाबा सब scientific भी है. देखो अभी अर्शन जो टर्मरिक लगाते हैं ना हल्दी, तो वो इन्फेक्शन नहीं होता है. Like, you know, you will be safe for the next 4-5, मतलब healthy for the marriage basically. And do you know why the sister is supposed to help the groom tie the knot? Why? See, people don't know. Even Deepa doesn't know. Why? Because sister is an integral part of the particular unit of a family. Yeah. And she's a person who goes out of the family. And Yeah. being out of the family, she's actually being, the bond between the couple, because she is also going to live in the same boat as the daughter-in-law. So empathy between the sister and the wife going to come stronger when she actually has a buy-in into the whole thing. That's what they do. And actually, these are promises made by the husband. By tying this first knot, I promise you that I'm going to take care of you. It is, I promise you that I will treat your family with the same amount of respect as my family. We are one family. So it's actually the husband and the wife, both of them. Dekha Faltwani, that is why the Indian cinema did not show that. The secularist people, Deepa, I'm about your side right now. The secularist media, the liberal media, didn't want to show that. They wanted to show like as though our Indian culture is all about subjugating the women. No, it's not. Yeah. You should come up with the series. Okay. ये सब ना एक इसका ना आइटम का हम लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, like, you know, Deepa, that way it's a good thing, like, right? Yeah, Deepa, if you're sitting miles away, it's still okay. You can inspire us. Come on, Deepa. Right? Let's do it. अभी मैंने जो बोला, and एक और मुझे अभी याद आया, like many things, something like that. Very छोटी बातें हैं, तो एक करके हम लोग ये कर सकते हैं. हाँ, we can make a song also. छोटी बातें लंबी हो जाती है. छोटी रातें हैं वो. यार कुछ भी गाएगा. Hey, but the point is, Deepa, the one wonderful thing is, I agree with you. Let's do it, Deepa. हमारे पास ढेर सारे ideas हैं. I'm sure Altu Baba would have sung छोटी बातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही झगड़े हो जाते हैं. Exactly. I was gonna come to that because, see, I'll tell you one thing. Because when we had our marriages, I'm sorry, I never had a marriage, but when you guys had the marriages, you guys did not follow the instructions. एक और भी कल रिचुअल है उसमें, अल्तुबा फाल्तुरानी में फटाक से बोल के रखूंगी. And there is like शादी में इतना 2 दिन में फिट करना ये सब, it's actually very tough. इसीलिए 5 दिन का होता था पहले जमाने में, लेकिन आजकल सबको टाइम नहीं है. In fact, there are I have heard many marriages nowadays giving to-go boxes. That is so sad actually. To-go boxes. But yes, in Maharashtra I have heard many. Half day one marriage. The blasphemy. तो मेरे को दूसरी पार्टी आ रही है तो जल्दी to-go box लेके जाओ, अपने घर में खा लो. Oh my God. You know, one day we should do a series for this. You know what, Deepa, I'll tell you what, I agree with you. Let's do this for Let's do a series Marriage of convenience इसको बोलते हैं. Hey, let's. That is why even marriages don't have the significance of what it was, because we have lost our culture, right? Correct. So we need to do a series. We talk about why the marriage, what is the secret marriage. If you want to break it down like a UGC, we'll make it like the UGC programs come, right? Oh, UGC program. Like that, we'll do a program and take a water exam. 5 days, a week long. Yeah. You know why? Because people, there's every step of a marriage, may it be this North Indian, South Indian, East Indian, West Indian, right? Every ritual marriage has a significance tied to it. People don't know that because you're speeding them through the whole process, because Bollywood is saying that you got to have a 1 hour video of your wedding. Yeah, Right? and Cut it should short, look cut short, like cut short. it should look like. घूमर करके आधा घंटा निकाल देगी. हाँ. And पीने में लाके सबको they said about. You should not drink when you're in a marriage, by the way. Anyway, thank you so much. Exactly. And also they show in movies कि शादी है तो पीना है. No. South Indian में कहाँ? I mean, it's absolutely not required. No, and yes. Not allowed. Actually. Yes, exactly. Because everybody should be in the same thing, because somebody's taking a serious step. अरे पीने हमारे यहाँ तो खाने को भी नहीं देते. 3 घंटे तक पूजा ये रहता है. दूल्हा दुल्हन हम लोग इतने भूखे थे, पानी पी रहे थे बस. एक और चीज पूछना है.
I don't know if it is in your area, but typically South Indian weddings don't happen in the night. Yeah. The muhurat is taken. Early It's mornings. early mornings, or it'll be like during the day. It's not in the night. Yeah. But it's the other way around. Rarely happens. It's extremely rarely when there is no muhurt in the morning at all. Yeah. जैसे इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा का वही हुआ था. हाँ. उसको गोधूली मुहूर्त बोलते हैं. हाँ. Which is a very rare मुहूर्त. तो वो शाम को निकलता है वो टाइम, auspicious time. तो my dad used to always say that. हमारा सब रेयर हुआ, इवन रेयर मुहूर्त शाम को हुआ. And rare baby also, no? Deepa. मम्मी तैयार होके बैठ के थक गई थी. And rare baby also they got, Deepa. Yeah. Deepa? Yes. Very good, Deepa ji. Thank you so much for calling us. We're going to be signing off right now anyway, but thank you for calling us. Sunte rahega, and of course, if you don't want to join us, you can always join us on our phone call or on video calls. You can do it right now to us. But of course, we're coming to a close of our show right now. Right, Faltoni? Absolutely. Jate hain koi aisa koi gana hai, Faltoni, you want to play right now for bandus? There's many movies that had. I think one really fun song is "That's the Way, Mahi Way." That's one of them. Or there's a movie called Mangalyam Tantu Dadena, which is a Malayalam song. Oh, really? Yeah. Oh my God. I thought it was a nice song, right? I don't know. I think it was a Malayalam song that we had played. Oh. But it starts with the Mangalyam Tantu Dadena tune. Or you can play something from two states, which is that Iski Huski Ho Iski Yara Da Iman Whiskey. Just now you talked about the fact that, anyway, Faltoni, let us play Mangalyam Tantu Dadena and finish that. How about that? Is that the song? There's a song from a movie called Sathiya, which I can play for you, Faltoni, which talks about a South Indian wedding again. Oh, wow. Yes. Oh, very good. Yeah. How So, about इसी गाने के साथ हम आपको छोड़े जाएंगे मृजा. We'll be back tomorrow with another fun edition of the Pam Pam Show. Don't go anywhere. Keep What are you saying, Faltoni? download the Radio D Hotties app to enjoy more super duper music and entertainment. Good night Shabba khair. and a pyar bhara. Mwah! Maza aa raha hai na? Great music, Vidajan, for the best in entertainment and the best in music and the hottest tracks ever. You can get it on Radio D Hotties. For more information, go to mediamahima.com. ये कौन बोला? क्योंकि हम हैं सुगंध